Yes, the recording has started. Good evening once again, and I request every one of you to please put your attendance in the chat box. And please confirm if my voice is clearly audible and the screen is also visible. Shlok, Priyal, it's audible. Great. Okay, there are two students who have not put the attendance. Aidur and Kurpe, would you please mind your putting your attendance? Okay, so Aidur is there. One more student. So I think we have started exercise 8.2. So my first question to all of you is, how many of you solved examples from this practice set and how many? आपने कितने examples यहाँ पे solve किए हैं इस practice set इस exercise से? Did you practice it? Did you solve any of the examples? All? Great. Any difficulty? कोई example में कोई difficulty? Okay, Anand. Shlok also solved all of them. No difficulty. Good to know that. What about Aidur and Anand? You did not solve examples? All right. So please solve this practice at exercise 8.2. Okay. There are already two students in our class who have solved the entire exercise and they find no difficulty. That means you people can also solve on your own. Okay. So we can skip this exercise and we can take the new topic. So our today's new topic is compound interest. You might have come across statements like 1 year interest for FD, that is fixed deposit in the bank at the rate of 9% per annum, or saving accounts with interest at the rate of 5% per annum. Right? You may have heard these terms. So what is interest? Interest is the extra money paid by institutions like banks or post offices on money deposited or kept with them, right? So interest is also paid by people when they borrow money. We already know how to calculate simple interest. So you know the concept of interest and simple interest, right? So let's take an example to calculate simple interest first. Okay, so that we can compare between simple interest and compound interest. So a sum of 10,000 is borrowed at the rate of a sum of 10,000 is borrowed at the rate of interest 15% per annum for 2 years. Find the simple interest on this sum and the amount to be paid at the end of 2 years. Okay, so यहाँ पे जो प्रिंसिपल अमाउंट है दैट इज 10,000, इंटरेस्ट का जो रेट है दैट इज 15% एंड जो ड्यूरेशन है वो है 2 साल का, राइट? ऑन ऑन 100 रुपीज इंटरेस्ट चार्ज फॉर 1 ईयर इज 15 रुपीज. ठीक है, 15% का इंटरेस्ट रेट, दैट मीन्स 100 रुपीज पे 15 रुपीज का हमें इंटरेस्ट मिलेगा 1 ईयर में. सो ऑन 10,000 इंटरेस्ट चार्ज वुड बी 15% of 10,000. So that would be 1,500 rupees. So interest for 2 years. एक साल का अगर 1,500 rupees interest होता है, so 2 साल का 3,000 होगा. So amount to be paid at the end of 2 years is principal plus interest. So principal is 10,000 and the interest is 3,000. So that makes the total sum as 13,000 rupees. Now find the interest and amount to be paid on 15,000 at the rate of 5% per annum after 2 years. Just do it quickly. I hope all of you have kept your notebook and pen with you so that you can solve examples. क्या करना है आपको यहाँ पे?
इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है एंड अमाउंट टू बी पेड फाइंड आउट करना है ऑन 15,000 rupees at the rate of 5% per annum for 2 years. सिंपल, ऊपर जो फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है उसी की तरह से हमें सॉल्व करना है, राइट? यू कैन डू इट ओरली ऑल्सो. कैसे करोगे? सी, 15,000 पे 5% हमें इंटरेस्ट पे करना है. व्हाट इज 10% ऑफ 15,000? 10% of 15,000? No, 1,000 would not be there. 1,500 rupees. 10% of 15,000. 15,000 का 10%. 1,500 रुपए. Yes. Abhi, this is the 10%. Now, what would be? No, not 150 real. It would be 1,500. Yeah. So, अगर 10% 1,500 है तो 5% कितना होगा? ओके, यू हैव सॉल्व्ड इट. तो इंटरेस्ट होगा 1,500, अमाउंट होगा 11,500. या, तो 5% वुड बी 750 रुपीज. एक साल का इंटरेस्ट रहेगा 750 रुपीज. सो 2 साल का रहेगा 1,500 रुपए. राइट? सो इंटरेस्ट वुड बी 1,500 रुपीज and the amount or the total amount to be paid would be how much? 16,500. Right, correct. Okay, so those who have entered late in the class, please put your attendance in the chat box. Okay. Yeah, let's move further. My father has kept some money in the post office for 3 years. Every year the money increases as more than the previous year. We have some money in the bank. Every year some interest is added to it, which is shown in the passbook. This interest is not the same. Each year it increases. So normally the interest paid or charged is never simple. The interest is calculated on the amount of the previous year. This is known as interest compounded or the compound interest or CI. Right? So let us take an example and find the interest year by year. Each year our sum or principal changes. So compound interest का अगर हम concept अगर मैं simply और shortly बताना चाहूँ, so it would be, let us suppose you put 10,000 in the bank. ठीक है? At the end of year जो तुम्हारा प्रिंसिपल अमाउंट है वो 10,000 है, उस पे इंटरेस्ट आपको मिलेगा 1,000 रुपीज फॉर एग्जाम्पल. ठीक है? नो फॉर द सेकेंड ईयर द इंटरेस्ट दैट यू विल गेट विल बी ऑन 11,000. मतलब आपका जो 10,000 पहले रखा था वो और जो इंटरेस्ट ऐड हुआ है, नाउ दैट विल अगेन विल बी कंसीडर्ड एज योर प्रिंसिपल अमाउंट. तो 2 साल बाद लेट अस सपोज आपको जो इंटरेस्ट हो बनता है 1,100 रुपए. ठीक है? सो नाउ यू हैव टोटल सम ऑफ 12,100 rupees. राइट? 12,100 rupees. अगर तीसरे ईयर की अगर हम बात करें, सो जो 10% इंटरेस्ट है या फिर जो कुछ भी इंटरेस्ट है दैट वुड बी कैलकुलेटेड ऑन 12,100 rupees, नॉट ऑन 10,000 rupees. मतलब समझ रहे हो? पहले ईयर इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ, वो सब में ऐड हुआ, फिर से उसको हमने प्रिंसिपल अमाउंट मान लिया, उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, अगेन एट द एंड ऑफ दैट ईयर the interest plus the previous sum amount become the principal amount for the next year. Okay, it is sounding a bit complicated, but it is not complicated at all. Okay, so calculating compound interest, हम compound interest calculate कर कैसे सकते हैं? A sum of 20,000 is borrowed by Hina for 2 years at an interest of 8% compounded annually. Find the compound interest CI and the amount she has to pay at the end of 2 years. ठीक है? सो प्रिंसिपल कितना दिया है हीना ने? 20,000. टाइम ड्यूरेशन कितना है? दैट इज
2 years, और इंटरेस्ट रेट जो है वो है 8%. एंड नॉट टू फॉरगेट, दिस इज नॉट अ सिंपल इंटरेस्ट, दिस इज कंपाउंड इंटरेस्ट. वी हैव टू फाउंड कंपाउंड इंटरेस्ट. कैसे करेंगे? सी, Aslam asked the teacher whether this means that they should find the interest year by year. The teacher said yes and asked him to use the following steps. ठीक है, अभी 2 ईयर के लिए कैलकुलेट करना है, और जैसे कि मैंने आपको कहा कि पहले ईयर का प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट वुड बी प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर. ठीक है, तो मतलब हमें पहले ईयर का पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा, दूसरे ईयर का कैलकुलेट करना पड़ेगा, अगर 3 ईयर की बात होती तो तीसरे ईयर का भी कैलकुलेट करना पड़ता अलग से. ठीक है, नाउ लेट्स कैलकुलेट फॉर द फर्स्ट ईयर. यहाँ पे हम सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे पहले ईयर के लिए. ठीक है, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर. लेट द प्रिंसिपल फॉर द फर्स्ट ईयर बी P1. Here P1 is equals to 20,000. P1 is principal for first year, principal amount for first year. Now SI1, that would be simple interest for first year. The principal for the first year P1, here P1 is equals to 20,000. And if we have to calculate the SI for the first year, 20,000 into 8 divided by 100, that would be 1600 rupees. ठीक है, 20,000 गुना 8 divided by 100 is equals to 1600 rupees. So that would be the interest for the first year. Now second year का जो principal amount रहेगा, what would be that? क्या रहेगा? वो रहेगा 20,000 प्लस 1600 रुपीज, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट प्लस पहले ईयर का SI1 या फिर सिंपल इंटरेस्ट. तो जो 21,600 है यहाँ पे, दैट वुड बी P2, प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर. तो सेकेंड ईयर के लिए फिर से हमें SI कैलकुलेट करना पड़ेगा, SI2, सेकेंड ईयर का सिंपल इंटरेस्ट. सो इट वुड बी 21,600 into 8 divided by 100, which results into 1,728 rupees. Find the amount which has to be paid or received at the end of second year. तो यहाँ पे हमें P1 plus P2 करना है क्या? SI1 plus SI2 करना है क्या? नहीं. We simply have to do P1 plus SI2, sorry P2 plus SI2, मतलब दूसरे ईयर का प्रिंसिपल अमाउंट प्लस दूसरे ईयर का इंटरेस्ट. सो दूसरे ईयर का जो प्रिंसिपल अमाउंट है दैट इज 21,600 रुपीज, एंड SI2 जो है that is 1,728 rupees. So if you add this, this would be 23,328 rupees. Now total interest given is 1600 plus 1,728 rupees. So that would be 3,328. Rita asked whether the amount would be different for simple interest. The teacher told her to find the interest for 2 years and see herself. ठीक है, तो अभी सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years अगर हम कैलकुलेट करते हैं, दैट इज गोइंग टू बी 20,000 into 8 into 2 divided by 100 is equals to 3,200 rupees. तो जो पहले हमने CI कैलकुलेट किया था कंपाउंड इंटरेस्ट, वो कितना आया था? 3,328 रुपीज, 3,328 रुपए, वो था CI. और SI अगर हम कैलकुलेट करेंगे सो दैट इज 3,200 रुपीज, 3,200 रुपीज. सो कौन सा ज्यादा है? वेदर CI इज बिगर और SI इज बिगर? विच अमाउंट इज बिगर वन? I expect answer from you in the chat box, all of you. Which amount is bigger, CI और SI? सिंपल इंटरेस्ट ज्यादा है या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट ज्यादा है? CI is more. How much more? 128 rupees more. Right. Let us look at differences between simple interest and compound interest. We start with 100 and try completing the chart. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट का और कंपाउंड इंटरेस्ट का हम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं कि कितना टोटल, मतलब कितना डिफरेंस इसमें आता है. ठीक है, एट द स्टार्ट ऑफ फर्स्ट ईयर
जब पहले ईयर हमने स्टार्ट किया, वी टुक 100 रुपीज, 100 रुपीज का हम इंटरेस्ट पकड़ते हैं 10%। सो ईयर एंड अमाउंट होगा 110 रुपए। सेम फॉर द कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब पहले ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट सेम ही है फॉर द फर्स्ट ईयर। फॉर द सेकेंड ईयर, प्रिंसिपल इज 100 रुपीज और इंटरेस्ट इज 10 रुपीज, राइट? सो 110 प्लस 10, मतलब इस ईयर का इंटरेस्ट और इस ईयर का इंटरेस्ट और प्रिंसिपल, मतलब दोनों इंटरेस्ट हमने ऐड किए, पहले ईयर का सिंपल इंटरेस्ट, दूसरे ईयर का सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट सिंपल, सो दैट इज 120। अगर यहां पे आप देखोगे, सो इट वुड बी, हमें 10% निकालना है 110 पे, सो इट वुड बी 121। ठीक है, so at the end of this it was 120, at the end of 2 years it was 120, simple interest was 120, but the compound interest is 121। थर्ड ईयर के लिए अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो इट वुड बी 130 रुपीज। पहले ईयर का 10, दूसरे ईयर का 10, तीसरे ईयर का 10, और जो 100 रुपीज हमारा था प्रिंसिपल, वो 3 ईयर का इंटरेस्ट और हमारा प्रिंसिपल अमाउंट तीनों मिला के चारों मिला के होता है 130 रुपीज। लेकिन जब हम तीसरे ईयर में सी आई कैलकुलेट करेंगे, तो सी आई कैलकुलेट करेंगे हम 121 रुपीज पे, दैट वुड बी अवर प्रिंसिपल अमाउंट। ओके, सो प्रिंसिपल अमाउंट पे अगर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं 10% का, दैट वुड बी 12.10 रुपीज। सो टोटल वुड बी 133.10 रुपीज, विच मीन्स यू पे इंटरेस्ट ऑन द इंटरेस्ट accumulated till then। ठीक है, मतलब हम इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट पे करते हैं इन द compound interest। Note that in 3 years, interest earned by simple interest is 30 rupees, whereas by compound interest it is 33.10 rupees। Note that the principal remains the same under simple interest while it changes year after year। मतलब अगर आप यहाँ पे देखो तो प्रिंसिपल 100 ही है, 100 ही है, 100 ही है तीनों ईयर्स के लिए, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में पहले 100 था, बाद में 110 हो गया, और तीसरे ईयर के लिए 121 हो गया, राइट? सो आई थिंक थोड़ा सा आपको अभी और कंफर्टेबल महसूस हो रहा होगा while dealing with compound interest। Deducing a formula for compound interest। now अगर let us suppose 2 ईयर की अगर हम बात कर रहे हैं, so we can calculate compound interest or simple interest for the first year, and then add the interest to the principal amount, and again calculate the simple interest on it and add it, that's it। ऐसा ही होगा। लेकिन अगर मैं आपको कहता हूं कि 15 ईयर्स के लिए कैलकुलेट करो कंपाउंड इंटरेस्ट, सो दैट वुड बी लिटल डिफिकल्ट। मतलब हम इतने कंफर्टेबली हम नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे, हमें 15 कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे, पहले ईयर का कैलकुलेशन, दूसरे ईयर का कैलकुलेशन, तीसरे ईयर का कैलकुलेशन, so the process would become lengthy। so for that what we will do is we will try and find out a formula। अगर हमें हमारे पास फॉर्मूला है we can put the values and we can sorry we can calculate compound interest for n number of years without repeating the steps। बार बार हमें एक ही टाइप के स्टेप्स रिपीट नहीं करने पड़ेंगे, राइट? सो दैट्स व्हाई फॉर्मूलाज आर देयर। सो you know to find the formula, we'll take some examples। let P1 be 5,000 रुपीज, प्रिंसिपल हमारा जो पहले ईयर का था वो 5,000 रुपीज है, और इंटरेस्ट रेट जो है 5 है, आर 5% का। हम यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन नहीं ले रहे हैं, कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं ले रहे, क्योंकि वी वांट टू फाइंड द फॉर्मूला। तो हम क्या करेंगे, we'll just go on and on and on and we'll try to find a pattern which will give us a formula। ठीक है। सो देखिए, यहाँ पे एक्चुअल कैलकुलेशन हो रहा है हमारे वैल्यूज के साथ में, और यहाँ पे हम फॉर्मूलाज में डील कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले ईयर का जो रहेगा 5,000 इंटू 5 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 100। सो P इंटू आर इंटू जो हमारा टाइम ड्यूरेशन है 1, दैट इज 1 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, सो A1 टोटल अमाउंट कितना होगा, सी दिस इज फॉर्मूला फॉर सिंपल इंटरेस्ट। सो प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट, दैट वुड बी द अमाउंट फॉर द फर्स्ट ईयर, राइट? और वही जो अमाउंट है
वो हमारा रहेगा प्रिंसिपल फॉर द सेकंड ईयर, दैट इज P2। यहाँ पे हमने फॉर्मूला कैलकुलेट कर लिया। सी A1 इज इक्वल्स टू P1 प्लस SI1 और इज इक्वल्स टू P1 प्लस P1R डिवाइडेड बाय 100। यहां से हमने फॉर्मूला ड्रॉ किया। वो P1 यहाँ पे है, R यहाँ पे है, 100 यहाँ पे है, P1 यहाँ पे, ठीक है। सो इफ वी टेक P1 कॉमन, P1 इन ब्रैकेट 1 प्लस R डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल्स टू P2। तो SI2 कैलकुलेट करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी सिंपल इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, P2 into R into 100, again we'll get some formula like this. So A2 would be P2 plus SI2, ठीक है। अभी P2 क्या है, P2 is this, SI2 क्या है, this. So if we go like this, we get some pattern and that results into this formula. Proceeding in this way, the amount of at the end of n years will be AN is equals to P1. P1 is the principal amount for the first year into 1 plus R divided by 100 raised to the power n. Now n क्या रहेगा, n will be number of years, ठीक है। So the formula simply we have is A is total amount, not the compound interest. Okay, A is total amount is equals to P under bracket 1 plus R divided by 100 raised to the power n, ठीक है। रेस्ट टू द पावर n सिर्फ इस ब्रैकेट के है, P के नहीं है, ठीक है। So Zubeda said, but using this we get only the formula for the amount to be paid at the end of n years and not the formula for compound interest, right? तो जो हमने ये formula derive किया है, that is for the amount, is it? That is for the amount. I'm so sorry guys. Okay, so I'm so sorry, I had some messages, so I had to reply. So कैसे कैलकुलेट करेंगे हम कंपाउंड इंटरेस्ट, कैसे कैलकुलेट करेंगे? वी हैव फाउंड अ फॉर्मूला। जो फॉर्मूला हमें मिला है, दैट फॉर्मूला इज फॉर अमाउंट, राइट। सो अमाउंट से अगर हम प्रिंसिपल माइनस करते हैं, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, दैट वुड बी CI और कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। सो अगर कंफ्यूजन है, विल टेक एग्जांपल सो दैट आपका जो कुछ कंफ्यूजन रहेगा वो दूर हो जाएगा। फाइंड CI ऑन 12,600 rupees for 2 years at the rate of 10% per annum compounded annually। हमें क्या कैलकुलेट करना है, CI कैलकुलेट करना है। हमारे पास फॉर्मूला है अमाउंट का, A is equals to P, that is P क्या है, what is P? Tell me the value of P here in this example. P is equals to how much? Yeah, 12,600. What is R here? R is rate of interest, 10 or 10%, 10, yeah, 10. And n is number of years. How many number of years are there? 2, right? So 12,600 in bracket 1 plus 10 by 100 square. तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सो आई होप यू कैन सिंप्लीफाई दिस। आपको ये सिंप्लीफाई करना आता है, नहीं आता है तो मैं बताता हूँ आपको। See, this is this 0 gets cancelled with this 0, and if we multiply and divide this by 10, right? So 10 by 10, so 10 plus 1 would be 11, and 11 by 10 would be the result. So 11 by 10 is here, and it's square. So this is what we will get. So this 0 gets cancelled with this 0, this 0 will get cancelled with this 0. So 126 into 11 into 11. Would you do that? Karo, calculation karo. 126 multiplied with 11, 126 multiplied with 11 multiplied with 11. What is your result?
व्हाट इज योर आंसर? कैलकुलेशन करो, नोटबुक पे करो, डोंट डू इट इन कैलकुलेटर। सब लोग करो, राइट डाउन द आंसर। 126 इंटू 11 इंटू 11। सब लोगों ने आंसर अगर नहीं लिखा तो वी आर नॉट गोइंग टू मूव फॉरवर्ड। Everyone has to write the answer in the chat box after doing the calculation. Is it 15,246? No, I don't think so. यहाँ पे प्रिंट मिस्टेक है बुक में, कैलकुलेट करो चलो एवरीवन। I feel there is a print mistake in the book. सब लोग कैलकुलेट करो और बताओ मुझे आपका आंसर क्या आ रहा है, सेम ही आ रहा है या फिर कुछ अलग आ रहा है? Okay, you have calculated. Real has got some different answer, I guess. 15,246. रियल का आंसर आया है 146। आइदुर का आंसर आया है 246। 146 है या फिर 246 है? ओनली 3 ऑफ यू हैव कैलकुलेटेड, बाकी लोग ओके। 15,246. Yeah, this is the correct answer, students. 15,246 is the correct answer. I was kidding. There is no print mistake or something like that. I was just checking whether you are calculating or not. Okay. So कोई print mistake नहीं है। मैंने झूठ बोला था ताकि मैं चाहता था कि आप लोग मैन्युअली कैलकुलेट करो एंड वेरीफाई द आंसर। ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज दिस, जो 15,246 रुपीज आया है वो क्या है? इज दैट द सी आई? इज दैट सी आई? नो। ओके, सो व्हाट इज दैट? Okay, Shlok says yes. 15,246 is CI, compound interest. Okay. Please correct me if I'm pronouncing your name incorrectly. Kavita, you're right. This is amount. Okay. And I'm sorry if this is your parent's name. Would you please put your name in the chat box? Those who have joined late, please put your names in the chat box so that I can, call you by your names and not with your parents' names or, your sibling names. Vivek. Vivek. All right. Thank you, Vivek. ठीक है। सो व्हाट इज देन सी आई? कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू ए माइनस पी। लिखो सब लोग यहाँ पे चैट बॉक्स में लिखो, लाइक दिस यू कैन राइट सी आई इज इक्वल्स टू ए माइनस पी, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 15,246। 15,246 minus 12,600 is equals to 2646. Here is equals to amount minus principal. That is, amount is 15,246 minus principal is 12,600 rupees, and the CI will be 2646. Okay, done. Is that copied from? Is that copied or you have typed? If you have typed, that's very very good. Okay. Find CI on sum of 8,000 for 2 years at 5% per annum. तो ये हमें कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट्स? सबसे पहले अमाउंट इज इक्वल्स टू 8,000
in bracket, चलो लिखता हूं मैं, I will try to write it. Okay, okay, somebody has solved it. CI is 820 and amount is 8820. Wow, that's really fast. Nice, nice. Okay, chalo then we will take, we'll take some bit of next topic, and we'll learn this topic in detail in the next class. So rate compounded annually or half yearly, semi annually. You may want to know why compounded annually was mentioned after rate. So does it mean anything? It does, because we can also have interest rate compounded half yearly or quarterly. Let us see what happens to 100 rupees over a period of 1 year if an interest is compounded annually or half yearly. Time period and rate when interest not compounded annually. The time period after which the interest is added each time to form a new principal is called conversion period. When the interest is compounded half yearly, there are two conversion periods in a year, each year after 6 months. So in such a situation, the half yearly rate will be half the annual rate. What will happen if interest is compounded quarterly? In this case, there are four conversion periods in a year, and the quarterly rate will be 1/4 of the annual rate. ठीक है, सो जो हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, डजंट नेसेसरी और इट इज नॉट नेसेसरी कि वो एनुअली ही कैलकुलेट किया जाए. इट मे बी कैलकुलेटेड हाफ ईयरली और क्वार्टरली एज वेल. ठीक है, सो इसके बारे में वी विल लर्न मोर. It is around 7:35, and I'm leaving you 10 minutes early because I have some other assignment to do. I'm so sorry for the taking this short lecture, but yeah, that's it for today, and I will I'll see you in the next class on next Wednesday. Till then, take care, keep studying, and bye bye, students. You are free to leave the class, today's class. Yeah, bye. We will see remaining topic in the next class. Bye. Bye 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 everyone. Shlok and Harsuk, please leave the class. The moment I ask you to leave the class, you are supposed to leave the class.